Hi guys and gals, so today I'm going to show you how to do razor shaving routine on sensitive skin. So for this you guys, I am using this razor and मैं alcohol pad भी इस्तेमाल करूँगी. Also you need a clean tissue और हम जो है वो पानी से plain water से अपने area को जो भी आपको razor करना है उसको wet करेंगे. Now hands are the best tools you guys, so use your hands. अपनी स्किन को जितना आप सिक्योरली पकड़ सकते हैं उतना पकड़ें एंड जस्ट गो अहेड डू इट. द वाटर विल हेल्प यू अ लॉट. स्किन पे बहुत ज़्यादा शार्प फील नहीं होना चाहिए. इट शुड ग्लाइड स्मूथली एंड या दैट्स द रूटीन यू गाइस. Once you finish the razing routine, then wipe your blade on a tissue paper before moving on to the next section. Here I'm showing you guys किस तरह से अपनी skin को आप tightly पकड़ें. I will be doing the other side and in between I like to clean my blade. This way मुझे कोई भी rash नहीं होता and everything is like a smooth process. So you guys, जब आपकी पूरी रूटीन कंप्लीट हो जाए तो अगेन यू कैन यूज़ दिस पैड और आप डिटॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट्स द बेस्ट एंटीसेप्टिक एंड यूर डन. नाउ यू गाइस, वी नीड टू हाइड्रेट आवर स्किन, सो यू कैन यूज़ शीट मास्क और एसेंस टोनर एज वेल. आई विल बी यूजिंग द एसेंस टोनर. और सबसे पहले मैंने अपनी रेजर वाला एरिया था उसको भी मैंने डैप किया था एंड देन आई लिटरली वेंट एंड अप्लाइड इट ऑन माई फेस. I went in with this gel. ये pumpkin gel है. Anything that is soothing would do the trick. I love the brand exfoliate for sensitive skin. It has never irritated my skin, तो मैं उसी के products इस्तेमाल करती हूँ. And voila, this is the final result you guys. One more step is remaining and that is to moisturize your skin. So I will be using this moisturizer. One thing I'll say कि अगर आपको कहीं बाहर जाना हो, so let your skin settle for 2 hours at least और उसके बाद apply a sunblock अगर धूप हो बाहर and then head out and avoid applying makeup on that day. I hope this video helped you guys and if it did, so do let me know in the comments. Rub rakha guys and gals. Bye.